Hello, good morning, Tamanna, Sanskriti, Deepika, Muskan, and others. I believe all are good. और थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए. Right? I always emphasize not for your this examination. ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट है ना, वो बिगिनिंग से होना चाहिए. आपको पता है कि कल आज का न्यूज़पेपर है. Three girls, you know, died because she was not able to see some drama, the Korean drama. Ninth floor says they jumped. Of the same family, three girls, Socho, aged 12, 14th, and 16th. Because they were living in some different world altogether. Anyway, look at the impact of social media on children, right? And अब क्या है कि बच्चों से ना आप छुपा नहीं सकते. मतलब और बच्चे अगर उसको छुपाना होगा ना, they will not reveal you, right? And it becomes. Two days ago, there was a discussion in the parliament that there should be, ban on social media for children, right? Bill has, I don't think it is a bill, but there was a discussion in the parliament. There was a discussion in the parliament. Yeah, yeah. बहुत हाँ अलग अलग कंट्री में there are different rules for regulating social media for children. Now in India we don't have a regulation. If you look at the kid, राइट इस जो किड का जो असाइनमेंट है वो स्कूल से आता है मोबाइल पे. अब बच्चे क्या है, मामा मोबाइल दोगी तभी पढ़ूंगा, क्योंकि मोबाइल में अब मोबाइल में पढ़ेगा क्या, वो उसका कुछ और वो क्लिक करता है, राइट. अनएंडिंग थिंग्स आर देयर इन द मोबाइल. देयर शुड बी सम लॉ, राइट, टू रेगुलेट social media or even mobile for children. It's not good. Few days ago I read some report, that is a British report. 40% of children has lost their capacity to read. ये इंग्लैंड में है. Anyway, let's move to the agenda of the day, and today we'll talk about parliament, right? हमने तीन लॉ आपको बताया है. आज है I discussed three law with you about three things: office of profit, not law, office of profit, and second RBA Act 1951 that disqualify an MP, and then we talked about anti-defection law. Right? These are the three grounds, the major grounds on which an MP or MLA is disqualified. But if you look at the three major ground, if you look at there are other ground also, right? As stated by Article 102, right? And what are they? What are they basically? If a person is unsound mind, or if a person is undischarged insolvent, right, or if a person have acquired the citizenship of the other country. ठीक है, ठीक है. अब वो तो आरपी एक्ट के अंदर हमने कवर कर लिया. राइट स्पीच जो है ना, जो आरपी एक्ट के हमने अंदर कवर कर लिया. यू सी, a person can lose membership for the social crime, right, or promoting amenity. Yesterday we covered it. So look at this is the for the disqualification.
These are the criteria for disqualification: office of profit, RPA, then you know, uh, unsound mind, unsound mind. ठीक है इसको एक साथ, right? Then look at the undischarged insolvent, undischarged insolvent, ठीक है, loss of citizenship, loss of citizenship, ठीक है. These are the criteria for disqualification, right? So three criteria already I discussed. Now three you should, वहां पर लिख दीजिए, और unsound mind, undischarged insolvent, and loss of citizenship. These are the six criteria on which member can, you know, attract disqualification. If you have any doubt, whatever I have taught you on disqualification, you can raise. Right? So see, there are six criteria. ठीक है. अच्छा, जब आप आर्टिकल 102 लिखे देखेंगे तो वहां पर है कि एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट पास टू लॉ. ये भी एक लॉ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट. ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, इट वाज आल्सो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. दिस इज आल्सो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, राइट? सो यू हैव बेयर एक्ट ना, आर्टिकल 102 खुद से पढ़िए. Now let me talk about, move ahead and discuss the vacation. How MP or MLA can vacate, the members, the seats, vacating of seats. That is today's discussion. Vacating of seats of MPs, MLAs. There are similar treatment. Now there are several, measures through which an MP or MLA can vacate his seat. Right? One is called double membership. Right? Today we are discussing how an MP or MLA can vacate their seats, or how their seats can be, taken as a vacating seats, right? One is, double membership. What do you mean by double membership? An MP or an MP cannot be the member of either, of the two houses at the same time. ठीक है? वो दोनों हाउस का मेंबर एक साथ नहीं बन सकते हैं. ठीक है? So consider, if a person is elected to both the houses of the parliament, then he must intimate or inform, right, within 10 days to the election commission that which house he wants to serve, right? Otherwise, he or she will lose the membership, or the seat will be, you know, ठीक है? In such case, the Rajya Sabha seat shall be vacated. Got the idea? Now, this is again the RPA Act which talks about, right? About the double membership, right? तो ये कौन बात करता है? ये RPA Act ही बात करता है. RPA Act 1951 basically talk about the double membership. थोड़ा जरा लिखिए तो, just write it. There are following cases in which the member of the parliament can vacate the seat. First, double membership. There are following cases in which
member of the parliament can vacate the seat. First to write double membership. Double membership. There are many. There are following. There are क्या लिखा? Following many cases ना or following cases in which the member of the parliament can vacate the seat. मैं आर्टिकल भी लिखवा दूं. देखिए आर्टिकल 101 for MP, article 101 for MP and article 190 article 190 explains for vacating seats. Article 190 explains for vacating seats. Right, so there are two articles. Achha, 191 is for 190 for MLA and 101 for MP. 101, explains for MP how they can vacate the seats, and 190 for MLA how they can vacate the seats. Got the idea? Now, first you write double membership. Double membership. Okay. As per RPA Act 1951, as per RPA Act 1951, as per RPA Act 1951, there are following criteria. There are following criteria. अब इसको हम ABCD में लिखेंगे. 1 A B C D. First you write A में लिखिए. A person cannot be member of both the house of the parliament. A person cannot be the member of both the house. A person cannot be member of both the house of the parliament. A person cannot be member of both the houses of the parliament if elected so. A person cannot be member of both the houses of the parliament if elected so. She must inform to the election commission within 10 days. She must inform the election commission within 10 days about their interest, ठीक है. कितने दिन में इनको इन्फॉर्म करना है? Within 10 days. देखिए, in case of default, the seat in the Rajya Sabha becomes vacant. The seat, उसका जो सीट है राज्यसभा में वो vacant हो जाएगा. The seat in the Rajya Sabha becomes vacant. Clear है ना ये? Now second you write अब इसमें क्या है कि मान लो कि मैं राज्यसभा का एक मेंबर हूं, लोकसभा में इलेक्शन हो जाता है तो राज्यसभा का सीट जो अपने आप वैकेंट हो जाता है. या मान लो वैसे वर्षा, तो दूसरा केस कि मान लो कि मैं लोकसभा में हूं और राज्यसभा में मेरा इलेक्शन हो जाता है स्टेट से, तो मेरा जो लोकसभा का सीट है वो अपने आप वैकेंट हो जाएगा. राइट? देखिए, if a sitting MP
is elected to the other house, if a sitting MP elected to the other house, his seat in the first house becomes vacant. ये भी आरपी एक्ट है. His seat in the first house becomes vacant. समझ में आया? हाँ. See, if the member is member, if a person is a member of the Lok Sabha, right? Fine. But consider that person is elected after 2 years or 3 years or 4 years, elected to the Rajya Sabha as well. Then his seat in the Lok Sabha shall become vacant, right? Now your question asking that how he will represent the people. Now his seat will become vacant till by election, and other person will be elected as a member for the remaining period of the. By election में क्या होता है? Remaining period के लिए आपका election होता है, right? So other person will मतलब contest and will represent. Got the idea? Now अब कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी जी और दिस टाइम राहुल गांधी elected from 2 seats. अब उस टाइम पे क्या होगा, right? The person must have to must inform the election commission which seat he wants to serve. ठीक है. अदरवाइज होता क्या है इस केस में कि दोनों सीट वैकेंट हो जाएगा. The both seats becomes vacant. Got the idea? नहीं. अरे for example, Rahul Gandhi was elected from Wayanad also and elected from Bareilly also, right? Now in that case he has to inform the election commission which seat he wants to serve, either of the Wayanad or of the यहाँ पर Bareilly. Otherwise both seats shall be vacant. Got the idea? Okay. If a person is elected from 2 seats, if a person is elected from 2 seats, if a person is elected from 2 seats, he should inform the election commission. He should inform the election commission that which seat he wants to serve. That which seat he wants to serve. In case of default, in case of default, in case of default, both seats becomes vacant. Both seats become vacant. Both seats become vacant. ठीक है. वन मोर. मान लो कि कोई एमएलए भी चुना जाता है. मान लो कि कोई एमपी है और एमएलए है. इफ अ पर्सन, राइट, तो दोनों का मेंबर एक साथ नहीं रह सकते. राइट, दोनों का मेंबर आप एक साथ नहीं रह सकते. राइट. तब इस केस में क्या होता है, राइट, कि उसको रिजाइन करना पड़ेगा. अदरवाइज ही विल लूज द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. देखिए, if a person is elected to the parliament as well as to the state legislature, if a person is elected to the parliament as well as to the state legislature,
then then he must resign. He must resign from the state legislature within 14 days. Then he must resign the state legislature within 14 days. Otherwise, his seat in the parliament, otherwise his seat in the parliament becomes vacant. समझ में आया? अगर वो एमएलए भी है और एमपी भी है तो एमएलए से रिजाइन करना पड़ेगा उसको, कितना? 14 डेज के अंदर अंदर। अदरवाइज उसका सीट कहां पर खाली हो जाएगा? पार्लियामेंट में खाली हो जाएगा। सीट विल बी वैकेंट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यही एक बड़ा था जो डबल मेंबरशिप। नाउ सेकेंड पॉइंट इज डिस्क्वालिफिकेशन, which we discussed. डिस्क्वालिफिकेशन, राइट? किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाए, चाहे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, चाहे वो उसका आरपीए एक्ट लग जाए, राइट, चाहे डिफेक्शन लग जाए, अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो गया तो सीट वैकेंट हो जाता है। सो सिंपल, राइट? लिखिए इसको। इफ अ मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड, इफ अ मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड on the grounds of the office of profit, the office of profit or RPA Act 1951 or RPA Act 1951 or the anti-defection law or anti-defection law, then seat becomes vacant. Then seat becomes vacant. या अनसाउंड माइंड भी घोषित कर दिया, राइट? या उसको दूसरा से, मतलब जैसे ये क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया या सिटीजनशिप खत्म हो गई, उस टाइम पे भी सीट वैकेंट हो जाता है, राइट? ठीक है, तो दूसरा कंडीशन है कि अगर डिस्क्वालीफाई हो गया किसी भी तरीके से, एंड देयर आर टू आर्टिकल्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। कौन कौन सा है? आर्टिकल 101 और दूसरा 191 ना, 192, यस 192, 19, वेट मेरे पास, यस यस, एक मिनट 191 सही है, 191 सही में लिखा था आप लोगों ने, मुझे लगा कि आप देख के बोल रहे हैं। 101 और 102 होगा, एक मिनट वेट, 102 और 191, ये सही, ऊपर में बदलना है 102 और 191। ये एमपी के लिए है और ये एमएलए के लिए है, ठीक है? ये दो आर्टिकल है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। तो अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता तो भी सीट वेकेट हो जाती है, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन, अब मान लो कि कोई भी मेंबर है वो रेजिग्नेशन देगा तो किसको सबमिट करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, राइट? मेंबर्स ऑफ द बेसिकली पार्लियामेंट सबमिट रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर। और राज्यसभा में कौन होता है?
राइट, तो वाइस प्रेसिडेंट, राइट, उसको वो रेजिग्नेशन लेटर देगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो मेंबरशिप वैकेट हो जाता है। लिखिए, अ मेंबर of the parliament can resign is a member of the parliament can resign by writing by writing to the speaker in case of Rajya Sabha, by writing to the speaker in case of Rajya Sabha, no, by the chairman. एक मिनट, the member of the parliament can write resign by writing to the speaker in case of Lok Sabha speaker, मुझे लगा चेयरमैन लिखा है, writing to the speaker in case of Lok Sabha and to the chairman in case of Rajya Sabha, to the chairman in case of Rajya Sabha. And if the presiding officer accept it, and if the presiding officer accept it, and if the presiding officer accept it, seat becomes vacant. Seat becomes vacant. ऐसा भी हो सकता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्सेप्ट ना करे, तो उस केस में सीट विल नॉट बी वैकेंट. What idea? Now, fourth is absence. राइट, अगर मान लो कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है, राइट, सेम प्रोसेस इज अप्लाइड टू द स्टेट ऑल्सो. 60 days तक, 2 महीने तक वो नहीं आता है, कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करता है, राइट, उस केस में हो सकता है यू नो ही मे लूज द मेंबरशिप, सीट में गो वैकेंट. देखिए जरा इस बात को कि द हाउस कैन डिक्लेयर, the house can declare the seat of a member vacant. The house can declare the seat of a member vacant if he is absent from all its meeting, if he is absent from all its meeting for a period of 60 days, for a period of 60 days without its permission, without its permission, its permission, हाउस के परमिशन से. हाउस के परमिशन से कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं. अगर आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया, राइट, और 60 दिन तक आप आए ही नहीं, तो हाउस कैन डिक्लेयर दैट सीट हैज बिकम वैकेंट. ठीक है, अब हाउस की बात क्या है, ये कौन कह सकता है हाउस में? स्पीकर लोकसभा में एंड चेयरमैन राज्यसभा में. अब और भी केसेस हैं, लिखिए अदर केसेस. और भी केसेस है वेयर द सीट बिकम्स वैकेंट. देखिए देयर आर अदर केसेस by which member can vacate the seat. There are other cases by which member can vacate the seat. अब इसमें थोड़ा सा 2-3 केस लिखेंगे हम लोग. फर्स्ट लिखिए, if the court declares election of a member
as a null and void. If the court declares election of the member as null and void. ऐसा हुआ है कभी? इंदिरा गांधी के केस में हुआ, पता है? इंदिरा गांधी जी का जो मेंबरशिप था वो इसलिए वेकेट हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया था, राइट? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने. सेकंड, if member is expelled by the house. Third, if the member is elected to the office of president or vice president. If member is elected to the office of president or vice president or appointed as a governor or appointed as governor, the seat becomes vacant. The seat becomes vacant. Got the idea? Making sense that, the cases in which seat becomes vacant. So there is double membership, disqualification, resignation, absence, and there are other also cases through which seat becomes vacant. Okay? Now I'll talk about presiding officer in the both the houses or officers in both houses. अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो सबसे बड़ा जो ऑफिस होता है वो स्पीकर का होता है. उसके बाद होता है डिप्टी स्पीकर का. उसके बाद एक होता है ऑफिस जिसको बोलते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन. राइट? और फिर फोर्थ होता है सेक्रेटेरिएट. ये ऑफिसेस होते हैं लोकसभा में. ठीक है? जब राज्यसभा में देखोगे इसको बोलते हैं चेयरपर्सन. जो इक्विवेलेंट होते हैं स्पीकर के. डिप्टी चेयर इसके होते हैं डिप्टी चेयरपर्सन. और थर्ड होता है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन. एंड फोर्थ होता है सेक्रेटेरिएट. दोनों हाउस में सेक्रेटेरिएट होता है. सेक्रेटेरिएट दोनों हाउस के लिए कॉमन भी हो सकता है. वो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है डिसाइड करने का. These are the basically offices or officers in the कहां पर? पार्लियामेंट. राइट? लोकसभा में ये 4 है और राज्यसभा में these are the 4. We will see one by one. ठीक है? हमें one by one सबको पढ़ना है. First we will look at the speaker. The speaker. Now if you look at each house has presiding officer like Lok Sabha or Rajya Sabha. The presiding officer of the Lok Sabha is called speaker, right?
and there is a speaker, there is a deputy speaker also. And the speaker is elected by the Lok Sabha from amongst its member, right? And very much as soon as the parliament meet, जब नया पार्लियामेंट आता है तो जितना जल्दी हो सके, ठीक है, इसका इलेक्शन हो जाता है. बट आप देखेंगे कि इलेक्शन होगा तो उससे पहले एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर. प्रोटेम स्पीकर. अच्छा, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर इज बेसिकली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. एंड प्रोटेम स्पीकर इज लाइक टेम्पररी speaker, very temporary speaker who presides the very much first sitting of the house, right? That, like for example, election of the speaker, and also administer the oath and affirmation, right, of all members. ठीक है, all members of the house. अगर members ने oath and affirmation नहीं लिया और फिर बाद में ऐसे ही आ गए तो पता है पेनल्टी है उनके लिए, उनको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो प्रोक्लेम स्पीकर का काम क्या होता है? राइट, टू एडमिनिस्टर द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द राइट ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस, राइट? विल टॉक अबाउट प्रोक्लेम स्पीकर लेटर ऑन. लुक एट द स्पीकर. सो स्पीकर इज इलेक्टेड. तो इस इलेक्शन में प्रिसाइड कौन करता है? प्रोक्लेम स्पीकर ही प्रिसाइड करता है, राइट? समझ में आया? राइट. सो जरा दो लाइन लिखिए तो. देखिए, each house has presiding officer. Each house has presiding officer. And the presiding officer of the Lok Sabha is called speaker. And presiding officer of the Lok Sabha is known as a speaker. राइट. अब इसके बाद इलेक्शन का लिखिए. इलेक्शन. The speaker is elected by the Lok Sabha. The speaker is elected by the Lok Sabha from amongst its members. The speaker is elected by the Lok Sabha from amongst its members as soon as possible. As soon as possible. ठीक है. Whenever, continue. Whenever the office of the speaker falls vacant. Whenever the office of the speaker falls vacant, the Lok Sabha elects another member as a speaker. The Lok Sabha elects another member as a speaker. ठीक है. अच्छा, इसके इलेक्शन के लिए डेट कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट, राइट? देखिए, द डेट फॉर इलेक्शन of the speaker is fixed by the president. ठीक है. तो जब इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट को दो तीन काम मेजर करना होता है. एक तो एड्रेस करना है उनको पहला दिन हाउस, और फिर एक प्रोक्लेम स्पीकर को नॉमिनेट करना है, और ये भी डेट फिक्स करना है कि स्पीकर का इलेक्शन कब होना है.
राइट. सो दो तीन काम जो है उनका मेजर होता है, राइट. अब ये टेन्योर क्या है, व्हाट इज ए टेन्योर, लिखे तो टेन्योर क्या होता है स्पीकर का. इसको समझिए जरा कि स्पीकर हैज you know and or a speaker will not resign along the government, no. The speaker resigns just the new parliament begins the work. ठीक है, न्यू पार्लियामेंट मान लो कि आज काम करना शुरू हुआ, तो एक दिन पहले जो स्पीकर है वो रिजाइन कर देते, राइट. और नेक्स्ट डे क्या होता है, प्रोक्लेम स्पीकर बन जाता है और फिर स्पीकर का इलेक्शन. सो इट इज ए कंटिन्यूअस ऑफिस, यू कैन से, राइट. इट इज ए कंटिन्यूअस ऑफिस. ये ऐसे नहीं कि सरकार ने रिजाइन कर दिया तो ये लोग भी रिजाइन कर देंगे, स्पीकर रिजाइन कर देंगे, नो, राइट. The speaker remains in the office, right, till the basically or before just new parliament begins. Got the idea? Now write it. The speaker remains in office just a day before, just remains in office till a just day before the new parliament begins its work. Till just day before new parliament, till a just day till a day just before the new parliament begins. समझ में आया, राइट. एक दिन पहले तक वो ऑफिस में रहते हैं. लिखिए, it is also said that the speaker remains in office during the life of the Lok Sabha. The speaker also remains in the office during the life of the Lok Sabha. ऐसे भी टर्म को यूज किया जाता है, during life of the Lok Sabha. However, the speaker can vacate his office in three cases. First, if he ceases to be member of the Lok Sabha. अगर वो मेंबर ही नहीं रहा तो फिर वो स्पीकर भी नहीं रहेगा. Got the idea? If he ceases to be member of the Lok Sabha. Second, if he resigns by writing to the deputy speaker. If he resigns by writing to the deputy speaker. Third, if he is removed by a resolution. If he is removed by a resolution passed by a majority of all then members of the Lok Sabha.
अब इसको पढ़िएगा, यही लैंग्वेज यही लिखा जाता है, राइट, जो मैंने आपको लैंग्वेज बताया है। अब इसको कौन सा ये मेजोरिटी है, ये इफेक्टिव मेजोरिटी है। क्या लिखा है, रिजोल्यूशन पास बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल देन द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, उस वक्त जो जितना है उसका मेजोरिटी, राइट। तो जो वैकेट है उसको काउंट नहीं करेंगे। इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होता है, टोटल माइनस वैकेट बाय 2 + 1 करते हैं, यही करते हैं ना, राइट। देखिए, such resolution must be introduced must be introduced after support of 50 members of the house. Such resolution must be introduced after 50 members support of the house and a 14 days advance notice and 14 days advance notice should be given, and 14 days advance notice should be given. समझ में आया, राइट। तो रिमूवल से भी, इसका रिमूवल प्रोसेस भी से भी ये वेकेट कर सकते हैं। अच्छा, चौथा केस भी था, डेथ ही हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं। जितना माया मोह है, इंसान जब तक जिंदा है तब तक सारा माया मोह तब तक है, खत्म तो इंसान खत्म, संसारी खत्म, है ना। चौथा केस भी हो सकता है, बट मैंने, राइट। सो देयर आर 3 केसेस वेयर द सीट कैन बी वेकेटेड, ठीक है। अब क्या है कि आपको बता दूं कि जब रिमूवल रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है स्पीकर के केस में, तो विल स्पीकर प्रिसाइड द हाउस? नो। इन सच केस क्या होगा, डिप्टी स्पीकर विल टेक द प्रिसाइड, ठीक है। समझ में? अब मान लो डिप्टी स्पीकर भी ना हो, तो डिप्टी स्पीकर नहीं होगा तो क्या होगा इस केस में? कौन? प्रोटेम स्पीकर? नहीं। देन प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अ पर्सन, राइट। अगर ऐसे दोनों नहीं है, दोनों वेकेट है तो ठीक है, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अ पर्सन टू प्रिसाइड्स द हाउस। अगर, राइट, देखिए, व्हेन, चेंज द पैराग्राफ and write when a resolution for the removal of the speaker is under consideration, when a resolution for the removal of the speaker is under consideration, he cannot preside the house. He cannot preside the house. But he may be present. He may be present and speak. But he may be present and speak. And vote can vote also at first instance. And can vote also at first instance. During this period, Deputy Speaker presides the House. During this period, Deputy presides the House.
Got the idea? So we talked about election tenure. Now look at the power and functions of the speaker. स्पीकर का पावर जो है ना तीन जगह से आता है, राइट? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन इनको पावर देता है. There are several articles in the Indian Constitution which gives power to the speaker. ठीक है. जो दूसरा है उसको बोलते हैं, राइट, रूल बुक जनरली बोलते हैं. इसका नाम है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा. इतना बड़ा नाम है. लेट मी राइट. ठीक है. द रूल्स ऑफ प्रोसीजर rules of procedure and conduct of business of Lok Sabha. इसको आप छोटा में रूल बुक लिख सकते हैं, राइट. इट गिव्स ऑल्सो पावर टू द स्पीकर. अच्छा, लोकसभा इससे चलता है. राज्यसभा के लिए ये अलग टेक्स्ट होता है, राइट, जिसको बोलते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा उस हिसाब से चलती है, राइट. जो तीसरा है वो है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन. पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो भी ट्रेडिशन से पावर उनको मिला है, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन से. These are the three major source for power, right, to the speaker. ठीक है. अब यहां पर ये तीनों मिलाकर के क्या पावर देता है स्पीकर को, that will see, right. ठीक है. Now let me tell you, power speaker is like Digga, right. वो जो भी चाहेंगे हाउस में वही होगा. In fact, like he is a guardian of the house. घर पे गार्जियन क्या होता है? गार्जियन जो चाहते हैं वो होता है, राइट. और फिर गार्जियन भी क्या चाहते हैं? गार्जियन वही चाहते हैं जो बच्चे खुश रहे, मतलब सब लोग खुश रहे. Similarly, if you look at the speaker, right, a speaker is a guardian of the house and he maintain decorum, discipline in the house. ठीक है. Now if you look at further, he's the final interpreter of the constitution within the house, right. या बिल के कुछ क्लॉज हैं. अगर लोकसभा में उस संविधान का क्या मतलब है वो लोकसभा के स्पीकर देखेंगे, राइट. हो सकता है वो चैलेंज हो सकता है कोर्ट में बाद में. दैट्स अ डिफरेंट मैटर. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. लुक एट द आधार बिल. आधार बिल को स्पीकर ने अलाउ किया कि ये मनी बिल है. बाद में उसको चैलेंज कर दिया कोर्ट में. दैट इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर. बट द स्पीकर इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स क्लॉज और बिल और देयर क्लॉज, राइट. द फाइनल इंटरप्रेटर. नाउ इफ यू लुक एट, राइट, द स्पीकर एडजॉर्न द हाउस. ठीक है. ठीक है. अब आपने 2-3 दिन पार्लियामेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, कई बार, राइट, आप देखेंगे कि पहले दिन एडजॉर्न कर दिया. ठीक है. उसके बाद एडजॉर्न ये काफी होता है. अच्छा, एडजॉर्न और दो चीज वर्ड ही होता है, एडजॉर्न एंड एडजॉर्न शिनदाई. एडजॉर्न में होता है कि टाइम मेंशन होता है कि ओके द हाउस इज एडजॉर्न टिल 2 PM टुमारो. तो 2 बजे तक हाउस बंद है. ठीक है. उसके बाद हाउस फिर से रिज्यूम करेगी. बट सिंपल कह दे कि हाउस इज एडजॉर्न. अगर टाइम मेंशन ना हो, इट मींस वो सेशन खत्म हो गया. दैट इज एंडिंग ऑफ द सेशन. और जनरली एंड ऑफ द सेशन में ऐसा होता है, राइट. ठीक है. सो इफ यू लुक एट द पार्लियामेंट, द स्पीकर एडजॉर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम. कोरम क्या होता है? द मिनिमम नंबर टू बी प्रेजेंट इन द हाउस टू स्टार्ट द बिजनेस. ठीक है. और कितना परसेंट है ये?
10% है. अगर 10% लोग प्रेजेंट है तो हाउस का काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा. उसके बाद स्पीकर का आप देखेंगे बहुत सारे पावर है. फॉर एग्जांपल, स्पीकर कैन डिसाइड वेदर पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नो. ठीक है. द स्पीकर प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग. ठीक है. देन इफ यू लुक एट द स्पीकर, you know, decide on the question of disqualification in case of defection. उसके बाद क्या है, right? The he act as an ex officio chairman of the inter parliamentary, Indian parliamentary groups. मान लो इंडिया का पार्लियामेंट का कोई डेलीगेशन जा रहा है, उसमें स्पीकर है, राइट? तो वो ऑलरेडी चेयरमैन होते हैं वहां का, उस ग्रुप का. Right? Now, what about the voting? The speaker does not vote on first instance, right? The speaker basically, you know, vote in case of equality. That is called casting vote. जब tie हो जाएगा, then speaker will vote, right? So these are the powers of the speaker. What the idea? लिखे तो जरा power and functions of the speaker. Power and functions of the speaker. Power and functions of the speaker. Okay. The speaker is head of the Lok Sabha. The speaker is the head of the Lok Sabha and represents as a guardian. Represents as a guardian of power and privileges of members. Guardian of power and privileges of members and parliamentary committee. And parliamentary committee. The speaker is the principal spokesperson in the house. The speaker is a principal spokesperson in the house and his decision is final. His decision is final. Got the idea? Now change the point or you can sort it later on, right? आप प्रिसाइज कर सकते हो उसको. लिखिए, the speaker extracts power from three sources. The speaker extracts power from three sources. The speaker extracts power from three sources, namely the constitution, comma, the rules of procedure and conduct of business. The rules of procedure and conduct of business of the Lok Sabha and parliamentary convention. And parliamentary convention. And parliamentary convention. On these grounds, the speaker has following powers and functions. On this ground, the speaker has following power and functions.
ठीक है, अब 1 2 जस्ट 1 2 3 4 5 लिखिए. देखिए, sorry, the speaker maintains decorum of the house. The speaker maintains decorum of the house. Second, he is a final interpreter of Indian Constitution. He is a final interpreter of the Indian Constitution, its provisions, its provisions, the the rule book, and its provisions, and its provisions, and parliamentary convention. धीरे. And parliamentary conventions. क्या लिखा? Just read it. क्या लिखा आपने? He is a final interpreter of the Indian Constitution, its provision, the rule book and its provision, and the parliamentary convention. Who is the final interpreter of the Indian Constitution? Yeah, अगर simple आ जाए तो Supreme Court, right? Supreme Court is a final protector and guardian of the Indian Constitution, right? लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन या उसका प्रोविजन को एक्सप्लेन करना हो तो ही इज द सुप्रीम. सेकंड यू राइट. नेक्स्ट, the speaker can adjourn the house. The speaker can adjourn the house or suspend its meeting. The speaker can adjourn the house and suspend its meeting in absence of quorum. In absence of quorum. In absence of quorum. जब quorum क्या होता है? Quorum होता है minimum number to be present to begin the business of the house. मान लो कम से कम कुछ नंबर तो होना चाहिए. स्पीकर आएंगे, 2 लोग और आ जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा, नहीं है, राइट? व्हाट इज द quorum? फिक्स्ड. quorum फिक्स्ड है 10%. यानी कि लोकसभा में कितना 543 होता है, यही नंबर है ना टोटल. अब इसका 10% कितना होगा 55, राइट? और आप देखेंगे कि उसमें कितना है 10% कितना होगा 25. यानी कि 55 लोग और 25 लोग यहां पर टोटल जोड़ो तो कितना होता है 80 लोग मिलकर के बहुत सारा काम कर सकते हैं. As I told you that when amendability of the Indian Constitution, they can bifurcate or trifurcate Uttar Pradesh. मात्र 80 लोग, 80 MPs, right? So quorum कितना है 10%. What is a quorum? Quorum is a minimum number of members to be present to begin the work. Now अगर quorum नहीं होगा तो the speaker will basically suspend the house or suspend the meeting basically. Next you write, the speaker presides joint sitting of the two house. The speaker presides the joint sitting of the two house. The speaker presides joint sitting of two house. अच्छा, ये ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है? ज्वाइंट सिटिंग होता है कि मान लो कि लोकसभा में और राज्यसभा में डेडलॉक हो जाए,
राइट। तो अब बिल तो आना है, राइट। तो क्या होता है, प्रेसिडेंट सम्मन करते हैं, द बोथ हाउस शुड कम एंड सिट टुगेदर। नाउ उसमें द हाउस हैज टू सिट टुगेदर, राइट। अब यहां पर एक और आपको बताओ, लोकसभा और राज्यसभा 543 है और कितना इधर 245। इसमें मान लो कि लोकसभा कुछ चाहता है पास करना और राज्यसभा नहीं चाहता, ज्वाइंट सीटिंग में क्या होगा, ज्वाइंट सीटिंग गिव्स एडवांटेजेस टू द लोकसभा, क्योंकि अब अगर इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 788। अच्छा, इसकी मेजोरिटी कितनी होगी, कितना होगा ये, हाँ ये 4 हो जाएगा, ये प्लस 395 होगा। अब ये मेंबर कितना है इनके पास 543 है, तो ज्वाइंट सीटिंग ऑलवेज गिव्स एडवांटेज टू द लोकसभा। अच्छा, ज्वाइंट सीटिंग कौन कौन बैठता है, प्रिसाइड करता है, द स्पीकर। जब स्पीकर नहीं है तो कौन प्रिसाइड करेगा, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा। मान लो डिप्टी स्पीकर नहीं है तो नो, ज्वाइंट सीटिंग में प्रेसिडेंट नहीं है, यहां पर प्रेसिडेंट नहीं करेगा, यहां पर चेयरमैन नहीं होगा, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जब वो भी नहीं है तब प्रेसिडेंट एक लोगों को अपॉइंट करेंगे कि भाई तुम प्रिसाइड करो, राइट। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा does not presides the joint sitting. Samma, yeah, what have you written? The joint sitting is conducted. The joint sitting is conducted. The joint sitting is conducted to resolve a deadlock between the Lok Sabha and the Raj Sabha. The joint sitting is conducted to resolve a deadlock between the Lok Sabha and Raj Sabha. Such joint sitting is summoned by the President. Such joint sitting is summoned by the President. Such joint sitting is summoned by the President. ये सम्मन कौन करते हैं, President summons basically the House to go for the joint sitting. Next you write, the Speaker decides whether a particular bill is money bill or not. The Speaker decides whether a particular bill is money bill or not. The Speaker decides whether a particular bill is money bill or not. Now next, the Speaker can allow for a secret sitting. The Speaker can allow for a secret sitting. The Speaker can allow for a secret sitting. Such sitting, such sitting can be arranged, can be arranged on the request of the leader of the house. Such sitting can be arranged on the request of the leader of the house. अच्छा, लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, लीडर ऑफ द हाउस होता है प्राइम मिनिस्टर। जनरली इफ द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर नहीं है तो लीडर ऑफ द हाउस जो क्या होगा, क्या होगा, कौन होगा,
any minister appointed by the prime minister. मान लीजिए मनमोहन सिंह was a member of the Rajya Sabha, right? ठीक है. Now he was not leader of the house in the Lok Sabha. Leader of the house was a minister appointed by मनमोहन सिंह. ये केस अगर मान लो कि ये मेंबर हैं लोकसभा का, the current prime minister is a member of the Lok Sabha, he is a leader of the house, right? If the leader of the house requests to the speaker to arrange a secret sitting, then secret sitting is arranged. और यहाँ पर क्या होता है secret sitting में क्या होता है, no stranger is allowed. That's very important, right? Like in secret sitting, no stranger is allowed to attend the meeting. In secret sitting, no stranger is allowed to attend the meeting. Next, right, the speaker decides on the question of disqualification in case of defection. The speaker decides on the question of disqualification in case of defection. On the question of disqualification in case of defection, as mentioned in 10th schedule. As mentioned in the 10th schedule. जो हमने कल ही डिस्कस किया था ना डिफेक्शन के ऊपर. Now, right, the speaker acts as a chairperson. The speaker acts as a chairperson of Indian Parliamentary Group. The speaker acts as a chairperson of Indian Parliamentary Group. अच्छा, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का क्या मतलब है कि मान लो कि कोई इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का कोई डेलीगेशन जाता है, राइट, और स्पीकर है, तो ही इज अ बेसिकली एक्स ऑफिशियो. नेचुरली ही इज बिकम द चेयरपर्सन. लाइक नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर. और राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो कौन होता है? द वाइस प्रेसिडेंट. राइट, ऑलरेडी वो है बाय डिफॉल्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देयर इज अ. नाउ राइट, the speaker appoints chairperson of all parliamentary committee of the Lok Sabha. Next, right, the speaker does not vote. The speaker does not vote in the first instance. In the first instance, okay, except while removal resolution is going on. Except when removal resolution is considered, I say, is considered. Is considered. The speaker vote in case of equality. The speaker does not vote. No, कोई बोल रहा है रिपीट करने के लिए. Right? The speaker does not vote. The speaker does not vote in the first instance except while removal resolution is considered. The speaker vote in case of equality. In case of equality of votes. फर्स्ट इंस्टेंस मतलब है कि मान लो कि
कोई भी डिस्कशन हो गया, अच्छा वोटिंग होगी, अब वोटिंग होगी तो ये फर्स्ट इंस्टेंस है वोटिंग का, राइट, एवरी मेंबर विल वोट, द स्पीकर विल नॉट वोट। बट मान लीजिए कि पूरा वोटिंग तमन्ना पूरा कि मान लो कि इक्वल आ जाए, जितना यस में का है उतना नो में का है, इस केस पे फिर वोट करेंगे ये, इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, राइट। देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज कास्टिंग वोट, इट इज ऑल्सो नोन एज कास्टिंग वोट। अच्छा, कास्टिंग वोट क्यों दिया गया है इनको? मान लो कि हाउस इक्वल टाई हो गया, राइट, तो ये डेडलॉक हो गया ना, ठीक है, डेडलॉक हो गया तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कास्टिंग वोट दिया गया। देखिए, द कास्टिंग वोट resolves the deadlock of the house. The casting vote resolves the deadlock of the house. See, we talked about the power and functions of the speaker. Tomorrow I'll talk about, the partiality or impartiality of the speaker. Right, ब्रिटेन में कहा जाता है once a speaker is always a speaker. हमारे यहाँ पर क्या है? Right, speaker is accused of being partial. ओम बिरला के ऊपर कितने बार लग चुका है आरोपी कि भाई ये पार्शियल है, राइट। अगर आप स्टेट में जाएंगे, यू गो टू द स्टेट असेंबली, इट इज रैम्पेंट, द स्पीकर बिहेव्स लाइक अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो हाउ will it impact democracy? We'll see tomorrow more about the speaker. तमन्ना पता चल गया what is the meaning of first instance of voting? Yes. थोड़ा बैठ के पार्लियामेंट संसद टीवी देखो थोड़ी देर तो पता चलेगा क्या होता है पार्लियामेंट में। और इफ यू डू यू लिसन रेडियो, कभी रेडियो यूज करते हो तुम लोग? नहीं करते हो? 100.1 जो इट्स वेरी यूजफुल रेडियो चैनल फॉर यू। 8 बजे रात को 8 बजे से 8:15 तक 15 मिनट ये देता है कि आज पार्लियामेंट में हुआ क्या। मात्र 15 मिनट अगर आप सुन लेंगे तो बहुत सारे नॉलेज मिल जाएगा कि पार्लियामेंट में ये हुआ, ये डिस्कशन हुआ, राइट। 100.1 FM गोल्ड, FM गोल्ड, राइट। चलो, सी यू देन।